Okay, shall we start? How many people? 11 people. So everyone, please join. अब Pandas इंस्टॉल हो गया? Okay, so I think we should start now. Okay, let's start. So to take the ये sign को थोड़ा please slow करो अपने level पे. So take the input from the user. इस fan को थोड़ा slow करो. बंद कर दो सर. ठीक है. Let's take the input from the user. So for taking the everyone please have a look over here. To take the input till this time whatever we have done, we were directly assigning a value to a variable. So for example, let's say I was saying a equal to some 45 or something, right? So we were directly assigning the value to a variable. Now let's take the input from the user. Let's say in runtime. If you want user to enter the value, okay, then how it can be done? So I'll use my input function. I'll say input, or let me say variable 1 equal to input, enter the value you want to pass. Okay, enter the value you want to pass. When I run it, when I run it, a small drop box comes. Can you notice? एक छोटा box आता है.
And do you also notice that on the right hand side of VAR1, can you see a star coming? एक star आता हुआ दिखता है. अभी coding मत करो, just have a look. Can you see a star coming? And also can you see that जहां पे Python 3 लिखा है वहां पे black circle आ रहा है? Black circle is coming. It means the process is running. It is waiting for user to enter a value. It is waiting for user to enter a value. So I enter something and I press enter. Do you notice the star goes and the black circle also goes? Process is completed now. So this value 75 is stored in your variable. Can you see that? So it will take the value from the user. Up please karo. Now give a try. हाँ, इसको on करो. Everyone is ready? All right. Anything special do you notice over here? कुछ खास? सोचो कुछ खास है? Anything special do you notice over here? वो तो मैंने बता ही दिया. उसके अलावा कुछ? नहीं, फिक्स क्यों रहेगी? नेक्स्ट टाइम यू रन यू कैन चेंज द वैल्यू. फिक्स क्यों रहेगी? सी, नोटिस नहीं कर रहे हो तुम लोग. टाइप फंक्शन रन करो. ये देखो इसका आउटपुट चिक चिक के कुछ बोल रहा है. देखो स्ट्रिंग है वो. यस, नाउ दैट्स द परफेक्ट आंसर. डू यू नोटिस इट इज टेलिंग यू इट इज योर स्ट्रिंग. मैंने तो नंबर एंटर किया बट वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया. नोटिस करता हूं. डू यू those who still don't agree that it is a string, let's do one thing. So if I say var1, so var1 plus 1, so what is the value of var1? It is 34343. I should get answer 34344. देखो क्या आंसर आता है. It says it cannot. Error देता है. Why? Because you cannot. What is plus? Plus is a mathematical operation. Mathematical operation cannot be performed on a non-numeric data. So that is why you are getting an error. अब यहाँ पे एक लाइन लिखो आके नीचे कमेंट में. Input will always store the data in a string format
और ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो जाता है, ठीक है, कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉर्मेट फॉर इनपुट, इट विल ऑलवेज स्टोर इट एज अ string format. You give number or you give anything, it will always store it as a string. And the best way to prove is that you cannot perform any mathematical operation on a non-numeric data. You cannot do any addition, subtraction, multiplication, division. ठीक है, देखो फिर से रन कर रहा हूं, दिखता है। सपोज करो मैंने नंबर कर दिया एंटर 23, 23 क्या है, नंबर है, राइट। बट देख रहे हो नंबर 23 को वो कोड्स में प्रिंट करता है। सपोज करो मैंने ए को डाला, a इक्वल टू 23, and when I print a, do you notice it is without quotes? So if something is in the quotes, then it is always a string, or you can say it's at least not a number. ठीक है, नंबर दिख रहा है लेकिन नंबर की प्रॉपर्टीज नहीं है उसमें, ठीक है। सो सबने इस सेंटेंस नोट डाउन किया, इनपुट विल ऑलवेज स्टोर द डेटा इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है। But if you want to overcome this challenge, I will not say problem, but this challenge, then what I can do is I can do something like this. I will say, let me create another variable. Let me say var2 and combine with your eval. Let me enter some number 56. var2. देखो, this time it is without a string. And if you want, you can run the type function also. Type var2. It is an integer. And another way is you can perform some mathematical operation on it. ठीक है ना? So what is this eval? Eval will preserve the data type. एक second सब लोग please hold on करना. What is the data type over here? Can I say integer? And why integer? Because user gave the integer. Let's say user is giving something else, 34.6. Do you notice it becomes float? Let me say user gives something else. ठीक है? So whatever value you will pass, based upon that value, it will convert your type. ठीक है? So eval will preserve the data type given by the user. इसके आगे एक लाइन लिख लो, eval will preserve the data type given by user.
Anyone who is facing any issue over here?
अच्छा, एक बात है, सबका दिमाग अलग अलग लेवल पे चलता है, अलग अलग टाइप के एरर लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो मैं भी नहीं सोच सकता, वो सब चीज लोग कर डालते हैं, ठीक है। बट एनीवे, this is how you learn. So Siddharth is saying, sir, I have a question. Yes, Siddharth, put your question. What is your question? Either unmute and speak or put it on the chat. Okay. Can we move ahead? Okay. Let's do one thing. Let's take the same thing and put it over there. Change the variable name. So whenever you give eval, it will preserve your data type, right? So I have a question. In variable, we can assign floating value. Still type is string, but variable 2 has floating value. Why? पहली बात सिद्धार्थ, योर दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग. सो सिद्धार्थ ने डायरेक्टली मेरे को क्वेश्चन भेजा है, उसने ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन आई एम पुटिंग ओवर, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सिद्धार्थ. डू यू थिंक दिस क्वेश्चन इज करेक्ट? क्या ये क्वेश्चन सही है? इन वेरिएबल वी असाइन फ्लोटिंग वैल्यू, स्टिल टाइप इज स्ट्रिंग, बट var2 हैज अ फ्लोटिंग वैल्यू. सो सिद्धार्थ, आर यू यूजिंग द eval or without eval? With or without eval? Is this question is without eval or with eval? नो सर, एक्चुअली मेरे पूछना ये था कि हम लोग जब वेरिएबल 1 के अंदर टाइप वेरिएबल 1 कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग दे रहा है. मैंने फ्लोटिंग वैल्यू उसमें पास की थी, तब भी वो स्ट्रिंग ही बता रहा है. लेकिन जब सर मैंने इसी के अंदर इवाल कर इनपुट करके और जब फ्लोटिंग वैल्यू इसके अंदर पास करवाई तो सर वो इस जो टाइप वेरिएबल 2 बता रहा है वो फ्लोटिंग बता रहा है. तो तुम ऐसा क्यों हो रहा तुम है? कह रहे हो कि after eval also it is giving string. It is after eval it is giving floating value. हाँ, तो वही तो मैंने भी बताया ना कि आफ्टर eval it will give floating value. देखो यही तो मैंने यहाँ पे लिखा ना, सबसे पहली चीज तो मैंने वही लिखी ना. Input will, if you are using the input function, it will always store data in string format. This is the nature. तुम कुछ भी, पहली चीज तो यही दिखाई दी ना. देखो सपोज पर मैंने 34.56 डाला, so it is a float number. Okay, but when I check the var1, guys please बात नहीं करो. Do you notice it is a string type? That is the default nature of the input. Input will always convert your data into string type. But if you combine with eval, now if I say 30, any number, let me say 0.78. So this is a float. Can you notice it is a float? वही same चीज तो है. The same thing I'm saying. So and देखो उसके नीचे एक documentation भी लिखा है, eval will preserve the data type given by the user. So if you give integer, it will take it as an integer. If you give float, it will take it as a float. If you give a string, it will take it as a string. अब बताओ डाउट क्या है? सर क्लियर. ठीक है ना? So ये आई होप, आई गेस तुमने ये दो लाइंस पे ध्यान नहीं दिया जो मैंने इनका कमेंट्स लिखवाए, और मैंने बोला भी ये इंटरव्यू के लिए याद रखो. इंटरव्यू के लिए भी नहीं तो अपने लाइफ के लिए तो याद ही रखो, इसका यूज पड़ता है. ठीक है, एट दैट टाइम कंफ्यूज नहीं होना. ओके, let's move ahead. ठीक है, it's not that you can use only eval, you can use other things also. So for example, if I say integer, and I run this thing, so 56 is an integer only. सब लोग प्लीज ध्यान से देखो. Does it gives me any error? कोई एरर देता है? नहीं, it doesn't gives any error. And you can see this also, it is number only. And if you want, you can see the type also, type var3, it is an integer. ठीक है. Now because I have given it as a int, now suppose if I say 23.0, 23.0 and 23 are same, but 23.0 is a float. Now let's see what happens. Do you notice it gives a error? Why? Because you have marked it as integer. So only integers can come over there. If you try to give any other thing, so let me say if you try to give something, again I'm likely to have a error only, because user itself needs to be careful to give integer. So if you want to put a check that only integer should be passed, then you use your integer. अगर हम integer use कर सकते हैं, then no one can stop me using float.
Now you give any number. Decimal में तो yes. So is this an integer or is this a float? Float भी कह सकते हो. Every integer is a float also, but not every float is an integer. ठीक है? देखो float है. Suppose if I give 2 and if I check var 3, do you notice it doesn't give 2 but it gives 2.0. Mathematically दोनों की value same है, but type has changed. ठीक है? Why? Because you have marked it as float. Now please practice for float also and for integer also. Which line? See, देखो वापस देखो रन किया मैंने 3 दिया सपोज करो. Is 3 is the integer or is it a float? Answer this question. वैसे 3 is the integer only, yet ठीक है, but I am entering a integer, but it converts the type into float, and instead of 3 it prints 3.0. Suppose अगर मैंने यहाँ पे int दिया होता, let me say if I could have given int and if I enter 3, it will give 3. It will not give 3.0. Try with int, try with float, and see how does it works. str लिखने की जरूरत क्या है? Input default str ही होता है. चलो अब पहली कोडिंग हम लोग करते हैं. Okay. Now you can say that real coding probably starts. Yeah. So
I'm going to work on the conditional statements. And this is the most needed thing in any language, conditional statements, and then probably we'll go to the loops. Okay? If you understand conditional statement in one language, any other language you can easily understand, everything will remain the same. So conditional statement as in your if and else. Remember, little bit we have seen in our SQL also, if and else or where condition, right? But over here we'll have a if and else. So basically, let's if and else is used to check the conditions. It is used to check the conditions. Let me say, I want to check if number, starting with a very small requirement, number is greater than 10 or less than 10. Greater than or equal to, probably let me say greater than or equal to 10 or less than 10. This is my requirement. So what basically I'll do, I'll say if number is, let me say, less than or equal to 10. I am telling you the syntax in the Python. Okay? Okay? Can I say this is nothing but one condition? ये condition है. लोगों को इतना समझ में आ रहा है कि that this is, you are not assigning the value but you are checking the value. ठीक है? If number is less than or equal to 10, then what I will do, after the condition I will give the colon. ठीक है? After colon I will press the enter. Enter press करूंगा मैं. And when you press the enter, the cursor will land somewhere. Cursor कहीं पे जाके रुकेगा. From that line, you need to run your statement. Now this is the entire body. This is the entire body of if. This is the entire body of if. So basically, in Python, we say you need to take care of indentation. Indentation means ek ke niche ek. You need to take the care of indentation. I will show you in the Python also. You need to take the care of indentation. Let's say you want to use your else also. You want to use your else also. So if I ke ठीक नीचे ही E आएगा. If you put E over here or if you put E over here, this is wrong. The first E of else should be directly below your I of the if. Are you getting my point? This is the syntax. You cannot change it. Now, should I put any condition over here with else? Else के लिए कोई condition दे? क्यों? अगर if already check हो गया तो else would be checking just the opposite thing. So you do not put any condition with else. But what you will do, you will give the colon. And again, you will press the enter. And then wherever the cursor lands. So basically, you will start to write from the very same position. Okay. And this would be the body of else. Okay. I know people have got a rough idea, not the exact idea, but let me write the same code in the Python and then probably you will understand. Achha, before I move over here, I hope people know the difference between this thing, A equal to 10 and A equal to 10. इसका मतलब पता है दोनों के बीच में difference? A equal to 10 means you assign value 10 to A. A equal to 10 means you are checking if the value of A is 10 or not.
सपोज मैंने a इक्वल टू 10 दिया, a इक्वल टू 10, आंसर ट्रू आ जाता है. Why? Because value of a is 10. Suppose if I say value of a equal to 9, it comes false because value of a is 9 and it is not 10. Similarly, can I say greater than or equal to? Value of a I have assigned is 9. Is 9 greater than or equal to 10? क्या 9 greater than or equal to 10 है? Why this? No, right? And that is why you are getting false. But suppose karo if I change the symbol. Is 9 greater than or equal to 10? Answer is true. 9 is less than 10. So do you notice true false का symbols? So इतना याद रखना, double equal to is for comparison, equal to is for assignment. You assign a value and you're checking a value. दो अलग अलग चीजें हैं. ठीक है? Take a minute and ये चीज करके देखो, दो लाइन का कोड लिखो and then I'll come to the if. And in any language, double equal to is for comparison only. इसने तो बोला 9 is greater than 10. Okay. Now let's write our if. Okay, let's write a code to check if the number is greater than or equal to 10. एक काम करो सब लोग, let me write it first. So I will say, let me say I am saying num equal to something. If num is greater than equal to 12, colon दिया and enter press किया. Do you notice the cursor lands somewhere? सब लोग यहाँ तक कोड रन करो, सब तक यहाँ तक करो बस. Do not run it. Only हाँ क्या होता, क्या चीज आना, स्टार आ रहा है. Do one thing, कर्नल में जाओ, इंटरप्ट करो. सिर्फ ये 2 लाइन लिखो बस, नथिंग मोर देन दैट. कोलन के बाद पुट योर कर्सर नियर द कोलन एंड प्रेस एंटर. देखो कर्सर कहीं पे लैंड होता है, जहां पे कर्सर रुकेगा हमें कोडिंग वहीं से करनी है. लेट मी से print value of num is, let me say num print यहाँ पे 12 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 10 आना चाहिए एक्चुअली. print num is greater than 12. Then put your else, colon, print
अच्छा सब लोग प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखो. So what I have done, I have said number equal to 10. सब अपनी कोडिंग स्टॉप करो एक सेकंड. Focus over here. If num is greater than or equal to 10, then I am writing few lines. So all these 3 lines are part of your if body. ये if का part है. The next 3 lines are part of your else. ठीक है. What is the value of number? Value of number is 12. So 12, when it comes to this if line, so 12 is greater than or equal to 10. So these 3 lines would be executed, right? देखो वही 3 लाइन एग्जीक्यूट हो रही हैं. So if you go inside the if, you cannot go inside the else. Suppose if I say number is equal to 5, then if should not be executed, else should be executed. देख रहे हो? I am saying inside the else body. Value of number is 5, number is less than 12. ठीक है? Either if would be true or else would be true. One thing. Now let's do another thing. Let's see where all I can get an error. Suppose करो मैंने print statement को यहाँ पे shift कर दिया. Do you notice the print starts coming in red? ये देख रहे हो? ये print red में आता हुआ दिख रहा है? It means there is a syntax error. And it says unexpected indent. It should start, कहाँ पे start होना चाहिए? जहाँ पे cursor land होता है. So what I need to do is I need to shift it. Again, do you notice it gives me an error? ठीक है ना? Indentation, you need to maintain. Indentation means एक के नीचे एक in simple terms. Suppose if I do the same thing with your else. Again, do you notice? It is giving me an error. So again, I need to shift it back. Suppose करो मैंने else को कहीं और डाल दिया. Do you notice? Again, it is an error. Because else का जो पहला e है, it should start just below the I of your if. ये सारी चीजें ध्यान रखनी है. ठीक है? अब प्लीज करिए. Done. Done means did you run it multiple times with different values? Check करो please. अगर वैल्यू 5 है तो क्या होता है, 10 है तो क्या है, 12 है तो क्या है.
तो यहाँ पे आउटपुट में ग्रेटर देन तुमने यहाँ पे जो लिखा है वो प्रिंट होगा ना, तो इक्वल टू डाल वो तो हमने यहाँ जो लिखा है ये कंडीशन ट्रू हो रही है, राइट? राइट, ये कंडीशन ट्रू है तो सारे पैटर्न से बताइए। Inside the body if, हाँ ये तो सिर्फ मैंने ऐसे डाला है तुम लोग को समझाने के लिए, समझाने के लिए, ऐसा थोड़ी थोड़ा सा मैं हर बार डालना है, तो सिर्फ मैंने ऐसा डाल दिया। आगे मूव करें। Okay, so over here, how many conditions I was checking? I was checking two conditions, either greater than or less than. But if I have more than two conditions, conditions दो से ज्यादा भी तो हो सकती हैं, right? Conditions. And similarly, किसी ने try करा इसको combining with the input, let's say num equal to float. किसी ने ऐसी कोशिश करी, input, enter the number of your choice. क्या हो गया प्रॉब्लम क्या? अच्छा फ्लोट, सपोज करो मैंने नंबर डाला, ठीक है? सो इनसाइड द बॉडी वैल्यू ऑफ नंबर दिस, सपोज करो मैंने 3 डाला, ठीक है? सो यू कैन कंबाइन इट विद योर इनपुट फंक्शन, ठीक है ना? यू कैन आस्क यूजर टू पास द वैल्यू। Correct? Shall we move ahead? Now, when we have more than 2 conditions to check. When we have more than 2 conditions to check. अच्छा, before we go for more than 2 conditions to check, एक काम करो, आज तक तुम लोग ने कुछ काम वैसे करा नहीं है, पहली बार करो, ठीक है? पाइथन में, एसक्यूएल में तो करा है, ठीक है? Write a small piece of code to check if the number is even or odd. It should take input from
user and tell if number is even or odd. Possible है? Please करिए. My assumption is everyone knows what is even number, what is odd number. किसी को नहीं पता तो बता दो, वो भी डिस्कस कर सकते. And no help from Google. खुद से करो please. It should take input from the user and tell if the number is even or odd. So I am unsharing the screen now. खुद से करो सब लोग. So I was still writing the question. Question is, write a program to check if the number is even or odd. Okay, thank you. एक बार चेक तो कर लेते हैं सही है कि नहीं. 12 को वो odd बोल रहा है. 12 is an even number. What about you? सबसे आगे बैठने के बाद भी तुम्हारा क्या चल रहा है दोस्तों? कल की चॉकलेट कितना ज्यादा ही हुई है. तो नीचे नहीं. क्लास कोई सवाल कोई जवाब कुछ तो बताओ.
सिर्फ एक लड़के ने ठीक करा है फिर। So I am getting one answer from Karthik. कौन है? Karthik Dabra. So enter number. So I am checking this code. Karthik, your code is wrong. So for odd number, it is giving the correct answer, but for even number, it is giving the wrong answer. Okay, check करो. Number 10 दो, देखो क्या आता है आंसर. Number 10 पे क्या आ रहा है? 5 दो. 1 दो. ठीक है, अगर इतना सही आ रहा है तो बस फिर लॉजिक सही है, मुझे देखने की जरूरत नहीं. Guys, even and odd का चेक क्या होगा? If you divide by 2, remainder should be 0. Right? That is the logic. If you divide by 2, remainder should be 0. Then it is an even number. Otherwise, it is a odd number. Simple. How do you check the remainder? Remember, कल बताया था percentage sign. Suppose, let me share the screen. So even and odd का check क्या होगा? Very simple. इतनी छोटी सी मैथ्स अगर भूल गया तो it's a very shameful thing. So divide by 2, and if remainder is 0, it's even, else odd. ठीक है, suppose if I say 6% 2, I get 0. But if I say 7% 2, I get 1. Right? तो बस सिंपल सी चीज लिखनी थी. Again take a minute and write your code. Done? बस कुछ नहीं करना, इसी को उठा लो, यहाँ पे कर दो कॉपी पेस्ट, फालतू की चीजों को हटा दो. Print number is even, number is odd, and condition which I'll put is num percentage 2 equal to 0. That's it. Or instead of float, make it as int. Enter 6, number is even. Enter 7, number is odd. That's it. Num, that's the only condition which you have to use. Simple. Num percentage 2 equal to 0. If number is 0, if number is an even number, remainder would always be 0. Otherwise, it would not be 0. Yes. Any even number would always be divisible by 2. अभी तो इवन ऑड दिया है, थोड़ी देर में प्राइम आने वाला है. प्राइम नंबर पता लगाओ. प्राइम नंबर पता है क्या होता है? Divisible by itself and 1. Any number is divisible by 1. 2 प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर है. 2, 3, 5, 7, right? 11, 13, 17. बट अभी प्राइम नंबर का लिखने को नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा दूर है वो, बट आज ही आएगा.
अच्छा अब मैं ना एक चीज कर देता हूँ ना, अगर सही आंसर आएंगे तो ब्रेक होगा, अदरवाइज ब्रेक नहीं होगा, ठीक है? बिकॉज कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा तुम लोग, इंसेंटिव कह लो या अलग टाइप का इंसेंटिव, ठीक है? अच्छा नाउ let's write a code. Let's see how to check multiple conditions. How to check the multiple conditions. Okay. So if you have if you have only two conditions, you can use your if and else. But if you have more than two conditions, so I'll write some kind of code. Let me say city, and you say input, enter the city name. So if city equal to let me say Mumbai, then I'll say print few sentences about Mumbai. Let's say you want to give the information to the user, print it is financial capital of India या वर्ल्ड का, इंडिया का ना, वर्ल्ड ज्यादा हो जाएगा, print it has Bollywood, okay, and I think let's do something like this. Then guys, do you notice one thing? Previously, सब लोग please ध्यान से देखना, previously I was using the else, this time I am using elif. Elif stands for else if. So with else I cannot give the condition, but with my elif I can give the condition. Let me take another city and let me say if city is equal to, और कौन सा city? दिल्ली डाल दें, विजन गया दिल्ली, घूमा फिरा, फाइनेंशियल की जगह सिर्फ कैपिटल डाल देते हैं, ठीक है? Print it's in northern part of country. Okay, so I have checked two conditions. Similarly, I can just keep on checking the conditions. Else, let's say city, और कौन सा city check करें? पुणे, चलो पुणे में रह रहे हैं तो पुणे को बेचारे को ले लेते हैं, ठीक है? पुणे एंड प्रिंट, अब पुणे के लिए क्या प्रिंट कराएं? हैं? Oxford of East has many colleges, ठीक है? ये तो खैर सच है. प्रिंट अच्छा सिटी है, ठीक है? So and then let's move ahead. This is just for fun so that people are engaged, ठीक है? elif city equal to anything, and then probably this thing can continue. This can continue. Let me put another city, Bangalore, and colon print, yeah, it's IT hub कर लेते हैं. और कुछ है बैंगलोर के लिए? Okay, has many startups. So it asks me to enter the city. So चलो स्टार्टिंग कर देते हैं पुणे से ही. क्या अच्छा माय मिस्टेक. देखो it has many colleges, अच्छा सिटी है. Now suppose if I enter Bangalore. Do you notice? So based upon the city which you enter, that particular loop would be executed. I'll not say loop, but that particular condition would be executed. सबको समझ में आ रहा है? And again, this indentation, print वाला जो indentation है, that has to be maintained. And E of your elif should be just below the I of your if. And at the end, you need to put your colon. Suppose, can you notice from Mumbai, I have removed the colon. And then it is giving me an
error. So putting that colon is must. It is a part of your syntax. Now please give a try. And try increasing your coding speed. एक काम करो, अपने कोड में सिटी एंटर करो नागपुर, देखो क्या होता है। क्या हो रहा है? चलो लंदन दे लो, देखे देख लो। है?
लड़का होशियार हो गया धीरे से। नाउ थिंक कि कुछ आउटपुट क्यों नहीं दे रहा है, else कंडीशन नहीं है, that's the perfectly right answer. Now everyone just stop your coding and have a look over here. So if I give anything Mumbai, Delhi, Pune, Bangalore, it gives me the proper output, right? Suppose मैंने यहाँ पे Bangalore दे दिया, it gives me. Now if I give something else, let's say Delhi, it gives me. But if I enter any other city, कौन सा सिटी एंटर कर दें, लेट्स से नागपुर एंटर कर देते हैं, ठीक है, it doesn't gives me any output, right? It doesn't gives me any output, it is only printing for this line, right? Why? Because when you give Nagpur or any other city, none of the conditions are satisfied. कोई भी condition satisfy नहीं होती. City is neither Mumbai, neither Delhi, neither Pune, nor Bangalore. So you don't get any output. But if you want some output, so when you enter any other thing, it doesn't give you any output. But कुछ तो output आना चाहिए ना. Some output should come so that user comes to know. So what I will do is I will say else print. Now print some logical message. This city is not part of our data. Now give them something. चलो लंदन दे देते हैं इस बार, है ना? This says the city is not part of data. If none of the condition is satisfied, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी condition satisfied नहीं है, then it will execute your else. If none of the conditions are satisfied, else would be executed by default. Okay. Now add a else statement. तो एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्लास में लोग सिर्फ कोड लिख के बैठ जाते हैं. ट्राई रनिंग इट मल्टीपल टाइम्स विद डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस. किसी ने क्या कैपिटल मुंबई डाल के देखा था, या कैपिटल DELHI और व्हाटएवर? व्हाई? बिकॉज Python is case sensitive, so you have defined as MUMBAI with small m. So if you give capital Mumbai, then it will say it is not part of your data. ठीक है? So later on we'll put the logic that it will convert everything into lower case. User कुछ भी दे, वो same case में जाएगा. ठीक है? Okay. अब next part क्या करें?
करना तो बहुत कुछ है. लेट्स सी यार. या तुम लोग को कुछ असाइनमेंट देता है. एक सेकंड देना मेरे को. तुम लोग बहुत लेजी हो गए हो आजकल. किसी ने बोला नहीं हुए. कोई बात नहीं. अच्छा ठीक है. Now, let's discuss about our loops. Okay. So before I put anything, please baat mat karo. Before I say anything, what do you mean by loop? Not in Python, but in your language, in your real life. Loop का मतलब क्या होता है? Continuously move करना, right? So loop you can say circle हो जाए ना. ठीक है. Loop means, so loops are used when you want to run a code multiple times. एक ही चीज को बार बार रन करने का हमारा मन है. Then probably loops would be used. ठीक है ना? Loops would be used. Now suppose, so loops can be of various type, but broadly हम दो loops देखेंगे, while loop and for loop. While and for. अगर ये तुमने यहाँ सीख लिया, same thing would be coming in R also, and I think same type of loops are there in other languages also. While loop and for loop. What is the meaning of while? जबकि? What is जबकि? मतलब तुम कुछ और कहना चाह रहे हो, शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. नहीं, उसने हिंदी में ही बोला है, मैं समझ रहा हूँ. While means जब तक. हाँ, वो शायद वही बोला था. ठीक है. So same thing. I got your feeling. So but don't be worried about this, that people are laughing. Continue with your answer, है ना? So while means till the time a condition is satisfied. While it is a day, let's do some hard work. While the class is going on, let's have a focus. While you are attending the lecture, don't see the mobile. ठीक है. ये ऑनलाइन वालों के लिए था, because normally जो ऑनलाइन में होता है वो मोबाइल लेके ही बैठता है. ठीक है. So while means till the time something is holding true, right? So let me say I want to write a program which prints even numbers, from 2 to 50. It prints all the even numbers from 2 to 50. So basically I want to output something like this: 2, 4, 6, 8, 10, 12, so on till your 50. This is what my requirement is. Let's see. Okay. So what I can do is, I'll say, let me put some number. Let me say num equal to 2. While num is less than or equal to 50. So at the starting, num is less than or equal to 50. Again, I'll put the colon. Again, I'll press the enter wherever the cursor. So I'll say print num. So what it will do, it will print the value of number as 2, because the starting value मैंने 2 दे दी थी. But when it prints the number, what will happen? After printing, after executing this line, अब ध्यान से देखना, after executing this line, it will again go back to this line. Why? Because
value of number is still 2 and 2 is still less than or equal to 50. But when it goes to this line, it again compares 2 is less than or equal to 50. So do you notice ये loop चलता ही चला जाएगा, कभी बाहर नहीं आएगा. So basically ये हो जाएगा infinite loop. और अगर ऐसा करोगे तो अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा. कर्नल you have to restart because it will never come out of the loop. Because value of num will always remain 2 and 2 is less than or equal to 50. So this loop will keep on running. ठीक है, करोड़ों साल बीत जाएंगे तभी भी वो रन करता ही रहेगा. So what I need to do? I need to do something so that it comes out of the loop. कभी तो खत्म होना चाहिए ना function. Sometime it should end. So what I will do is I will say num equal to num plus 2. Num equal to num plus 2. So value of 2 was, so what will happen? So let's say when it enters for the first time, and then what is the value of num? At first time, the value of num would be 2, right? But then value of num will become 4. So num is equal to num plus 2. So 2 plus 2 हो जाएगा. Second time the value will become 4. Third time the value will become 6. And this will continue. And when the value will become 50, again it will enter. But then num equal to 50 plus 2, that is your 52. Now when this 52 would be checked over here, it will say it is greater than. So this condition will become false. And if condition will become false, these lines will not be executed and you will come out of the loop. समझ में आया सबको? जल्दी से लिख भी दें. Let's see. Let me take some let me say number equal to 2 while number is less than or equal to 50. Print number. इसको रन करें. What do you think? Infinite loop में जाएगा? Can you notice? It just keeps on printing 2, 2, 2, 2, 2. Print होता ही चला जा रहा है. And it is still running. Can you see the star coming over here? Can you see a black circle coming over here? Python 3 की बाजू में. It means वो run हो ही रहा है. Now this is the example of your infinite loop. ठीक है? Because value of number is never changing. हमेशा 2 रह रही है and 2 is always less than 50. So ऐसे केस में क्या करेंगे? कर्नल को कर देंगे interrupt. ठीक है? At least वो बाहर आएगा. Print number and then I'll say number equal to number plus 2. Now it comes till 50 and then it stops. ठीक है ना? Now please, before you run these two lines, सबसे पहले उससे भी important line को लिखो. When creating the for loop, sorry, when creating the while loop, user needs to give a condition so that it comes out of for loop. तुमको ध्यान रखना है that it should not go in the infinite loop. Because in for loop, probably you don't need to give that thing. वो automatically handle कर लेगा. And over here also, like your if statement, indentation is a must. You need to take care of indentation.
Okay. Now, सबको इतनी चीज क्लियर आ रही? अच्छा, I hope one thing people can understand that within my loop I can also put my if and else condition also. ठीक है ना? Suppose if I want to print using my while loop, अब एक छोटा सा प्रोग्राम लिखो, using the while loop, using the while loop, or I'll not say using the while loop or whatever, तुम्हें जो लगता है करो. Using the while, write a program, write a code which creates two lists. First list should contain all even numbers, and second should contain all odd numbers, all even numbers between, let's say, 1 to 100, and all odd numbers between 1 to 100. I want people to use the, for practice as of now, use the while loop. Use the while loop. कैसे करोगे? सब लोग प्लीज एक सेकंड कोडिंग स्टॉप करो. लेट्स बिल्ड द लॉजिक एंड देन यू राइट इट. आई वांट अ लिस्ट. सबको लिस्ट याद आ रहा है? वी हैव डिस्कस्ड द लिस्ट यस्टरडे. इन लिस्ट कैन वी डू द कंकैटिनेशन? लिस्ट में कंकैटिनेट कर सकते थे, ठीक है? सो क्रिएट टू लिस्ट. Just to help you out, what I'll give you. Let me say L1 equal to this and L2 equal to this. So you will create two lists, one for even, one for odd. So what is L1? What is L2? हैं? क्या? टू लिस्ट. मुझे एक बेटर आंसर सुनना. लिस्ट तो है वो, बट कुछ और भी है साथ में. टू एम्प्टी लिस्ट. दो लिस्ट तो हैं बट खाली लिस्ट हैं, ठीक है? सो नाउ इफ आई यूज माय अपेंड फंक्शन, आई कैन कीप ऑन एंटरिंग द वैल्यूज, राइट? यूज दिस लॉजिक. कितना टाइम चाहिए? जब तुम लोग ये कर लोगे तभी मैं ब्रेक अनाउंस करूंगा. अब तुम लोग डिसाइड करो. 5, 10, 15, 20. आई वॉन्ट एटलीस्ट 5 to 6 right answers with proper logic. अगर गूगल करोगे तभी भी आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है? अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ब्रेक नहीं किया. Sir, can you scroll down towards the question? Thank you.
Don't invest your time in writing the question. Go for the solution. Question I am putting for you guys on the chat window. Take it from there. सबको प्रॉब्लम समझ में आया? At the end, I want two lists. One should contain all the even numbers between 1 to 100. Another should contain all the odd numbers. Even and odd का check already बता दिया है. If and else भी बता दिया. For loop और while loop भी बता दिया. And loop से बाहर कैसे आते हैं वो भी बता दिया. ठीक है? अब करिए प्लीज. List में append कैसे करते हैं वो भी कल बता दिया है. Only you know everything. You have to bring all of that together. खाने का सारा सामान दे दिया है, बस मैं खाना बनाना है. तो करो. पहले चेक करो अपना सोल्यूशन. कोई डाउट है तो मुझसे मत पूछो.
बारिश के मौसम में मस्त चाय पी रहा होगा। अब इतना मोटिवेशन दे दिया मैंने तुम लोग को। वैसे एक चीज तो है, लोग कोशिश तो कर रहे हैं। I can see the seriousness on the face. Those who are in online, guys, if anyone has done it, please share your answer directly to me. So Amol is sharing. Number this. I think Amol's answer is no, Amol. It's not correct. दोनों चॉकलेट बॉयज आज कोई आंसर नहीं कर रहे हैं। Try. Answer will come. Answer will come. अच्छा, let me do some help for you guys. कहाँ पे चैलेंज आ रहा है? Where exactly you are facing the challenge? Tell me. If you want me to help, तुम्हें अपना क्वेश्चन अच्छे से डिफाइन करना होगा। दोनों को क्या? What do you mean by that? हाँ, तो use your if and else. हाँ, within your while use your if and else. Within your while use your if and else. And when you are using if and else or while, make sure you have the proper indentation. ठीक है? So while loop will run from 1 till 100. उस while loop के अंदर में एक if and else की condition डालो. Within your while loop, put a condition for put if and else ka condition. If it is even, then it will append in one list. If it is odd, it will append in another list. As simple as. Code wise, it is very small. 4-5 line का ही code है. Only thing is you need to put it in the proper order.
I'm still waiting. Still waiting.
So Siddharth is putting one answer to me. Let me see, Siddharth, whether your answer. I know it is wrong, but sir, it is giving me the last value after 100 as odd. Okay, Siddharth, let me check your code. I am not sharing the screen as of now. एक सेकंड रुक जाओ, पहले सिद्धार्थ बाबू का कोड चेक कर लें. लॉजिक पार्ट ठीक है, बट यू आर नॉट अपेंडिंग इट इन द लिस्ट. दिखाओ, सही है, चेक किया L1, दोनों लिस्ट चेक करें, बट लिस्ट कहाँ है? लिस्ट लाइए. अच्छा, कितना और टाइम चाहिए? हाउ मच मोर टाइम? जिन 2 लोगों ने करा उनको तो मैंने क्लास से बाहर कर दिया. बाहर कर दिया मीन्स ब्रेक दे दिया. सोचा अब तक 2 चाय पी ली होंगे उन्होंने. हाँ, पुणे का वेदर, 2 चाय तुम्हारा वेट कर रही है. L2 डॉट अपेंड, यस. अपेंड फंक्शन याद करो, कल सिखाया था. सी दैट कोड. ये डेटा साइंस है, यहाँ पे हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है. ऐसा नहीं तुमने आज जो पढ़ा उसका कल यूज नहीं होगा. आ गया? पहले तुम चेक करो. चेहरे में खुशी. नंबर पण येत आहे. याद करो, फॉर इंडेंटेशन व्हाट आई हैव टोल्ड. इंडेंटेशन मींस एक के नीचे एक. हाँ, तो एक के नीचे एक डालो. अच्छा, ठीक है. So I don't think others are able to do it. Let me take this up. Let me take this up. Everyone now, please have a look. Stop whatever you are doing and have a look. And tell me at the end, probably you will realize कि हाँ, everything you knew, but फिर भी शायद नहीं कर पाए. Which means थोड़ा और practice चाहिए. So first, कोई coding नहीं करेगा, just have a look. I'll keep on explaining. ठीक है? Let me create 2 lists. Let me say even list and odd list. Okay, even list and odd list. I have already told you how to create an empty list, right? Can I say this? These 2 lines are automatically clear to you?
creating an empty list already बताया हुआ, कल भी बताया, आज भी बताया. Now let me say n equal to 1 while n is less than or equal to, or let me say less than or equal to 100. Just let me say equal to नहीं भी डालना है तो 100. अगर नहीं आएगा then we will see less than or equal to 100. Then what I will do, what is a check for even number? N percentage 2, n percentage 2 equal to 0. If this condition is satisfied, then it is an even number. What I will do, I'll put this in this thing. If n percentage 2 is equal to 0, then it is a even number. Then what I'll do, I'll say even list dot append. Now what mistake you were making was, you were putting even over here. Instead of even, you have to put n over here. Okay, you have to put n over here. If number is not even, then it is a odd number. Else I will say, जहां पे even list को append किया है, बस उसी को उठाओ, उस even की जगह उसको odd कर दो. Now, if I run this thing, it will automatically go into the infinite loop because value of n will always remain 1. So what I will give, I will say n equal to n plus 1. So even when the number is even, then also it will increase the value, and when the number is odd, then also it will increase the value. Run कर दें, run हो गया. Now let's check our even list. Let's check our even list. देख रहे हो सारे even numbers आ गए. कहां तक जा रहे हैं? Till 98. 100 नहीं आया. Let's do one thing. I can put it as, you can put it as less than or equal to. ठीक है ना? Less than or equal to. ठीक है? And then if you check your odd list. Odd list आ रही है? समझ में आ रहा है? अब खुद से करो. Now do on your own. Now whoever is able to do, they can keep on going on break. जिस इसका हो जाएगा, let me know. I'll have a look, please. हो गया? चेक किया आउटपुट. क्या हुआ? हो गया?
I think जिनको अभी भी समझ में नहीं आया है, लेट मी डू वन थिंग. देखो गाइस, एक सेकंड वापस सब लोग यहाँ पे देखो. एक बेसिक सा क्वेश्चन है दैट व्हाई आई एम गिविंग n इक्वल टू n प्लस 1 टू टाइम्स, राइट? इतनी चीज समझ में आ रही है सबको? सपोज लेट्स से वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, then this else part could be executed because 1 divided by 2, remainder would be 1. So when the starting value of n is your 1, so at the starting this else would be executed. Now if you do not give n equal to n plus 1, then how would the value of n will become 2? So if you give n equal to n plus 1, the value becomes 2. Now again it comes to the while loop. 2 is less than or equal to 100. Now 2% 2 is equal to 0. So this if part would be executed. And if you do not give n equal to n plus 1, how would the value will become 3? Because it will never go into your else part. तो इसलिए दोनों जगह देना पड़ेगा, राइट? जब इवन हो तभी इंक्रीमेंट करें, जब एल्स हो तभी भी, ऑड हो तभी भी. ठीक है, वेरी सिंपल. कुछ तो डिफाइन करोगे ना? ओके, देन व्हाट डू यू वांट टू डिफाइन? कर दो, 0 कर दो. Then also it will work.
बट मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 1 से 100 बोला था, ठीक है? तो तुम 1 कर दो या जो भी कर दो, मुझे सफर करना पड़ता। ओके, सो ध्रुव हैज गॉट, ओके ठीक है। नाउ गाइस टेक योर ब्रेक, है ना? कितने मिनट का ब्रेक चाहिए? So take a break of around 20 minutes. Let meet around 11:20. 20 minutes break. ठीक है? आउटपुट दिखाना है, कुछ एरर है? Invalid syntax else. कोलन दीजिए, else के बाद कोलन का है। हाँ कोलन, हाँ आप रन करो। लिस्ट प्रिंट करानी पड़ेगी। ये क्या किया है तुमने? क्या इश्यू आ रहा है बताइए? So those who are in online also they can go for the printers. Take 20-30 minutes.
Okay, so let's get started. I think more than 20 minutes हो गए होंगे, right? Just now. Let's discuss about our those who are in have joined online. Guys, tell me, am I audible? Let's discuss our for loop. Okay, let's discuss our for loop. Let me create. So since I'm saying it's a for loop, the nature will remain the same. Nature will remain the same as in if you want to execute the code for more than once. That would be your for loop. So whether it is for a while, the nature will still remain the same. Let's take a simple example. I'll say, let me create a list, example list, and I say some numbers. I put some numbers. कुछ भी numbers डाल दो. Okay. So this is a list which contains some numbers. Now, let me say my requirement is to separate the even numbers and the odd numbers. Let me say this is my requirement. I want to separate the even numbers and the odd numbers. Okay. So all the even numbers should come in one list. All the odd numbers should go to your another list. Okay. So जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है, let me write it in more clear way. All the even number present in exam or example should go to one list and all odd in another. Okay, this is what I want to do. So we will solve this thing, but before that, let's see how I execute a for loop. So I'll say for I in exam or example colon, and again यहाँ पे भी indentation we need to take care of. Press your enter and wherever your cursor lands, वहां से हम लोग चालू करेंगे. Let me say print I. What's the output? Can you notice the values are printed in the same order in which they are present in the example list? Can you notice 10, 2, 3, 4, 5, whatever, right? Now what is I? कोई बता सकता है I को क्या बोलते हैं? नंबर नहीं, वेरिएबल तो है, बट कौन सा वेरिएबल है? टेम्परेरी वेरिएबल है. It is a temporary variable. You did not assign any value to the I. The value of I is coming from the value from your this thing. So instead of I, you can take anything. Let me say you take this thing, ABCD. So now ABCD is your temporary variable. Okay. So when it comes to the for loop, so for ABCD in exam, the value of ABCD will become 10. And then it will print your 10. So for loop will start from this 10 and it will go till, let's say, your 2. पहले नंबर से स्टार्ट होगा और आखिरी तक जाएगा. Okay, for this. So next time when it comes, the value of ABCD becomes 2. Then it prints 2. Then its value of ABCD becomes 3. So it will start from the first record and it will go till your
लास्ट रिकॉर्ड. इसको कुछ ऐसा समझ लो, लेट्स से फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, जब तक एक भी स्टूडेंट बचा होगा फॉर लूप चलता रहेगा. इन द फॉर लूप am I giving any incremental condition, num equal to num plus 1 or I equal to I plus 1? Yes or no? No. Why? Because it's not needed. What I'm saying, क्या हमने कोई ऐसी कंडीशन दी n equal to n plus 1 or n equal to n minus 1 or whatever? नहीं, right? Because it is not needed. It will start from first record and it will go till your last record. Not needed. So chances of for loop going into the infinite is very less. Till the time your this list itself is infinite, तब तक वो infinite में नहीं जाएगा. पहले रिकॉर्ड से चालू करेगा और आखिरी तक चला जाएगा. And it will store the values while your loop is running. It will store the values in your some temporary variable, whatever name you give. Normally it is a practice that we give I, J or K or whatever. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे I दे दिया. But I repeat, instead of I you can give anything. Instead of I you can give anything. Is this part clear? Is this part clear? Now let's try to solve this requirement. So what I'll do, I'll create one list. Let me say even list, and let me say odd list. Now for I in exam. So to check for even and odd, I need to use my if condition. So what I'll do, I'll say if this time what should I divide? Should I divide exam or should I divide I? I को divide करेंगे. If I percentage 2 equal to 0, it means it is an even number. I'll give a colon and I'll press the enter. Then what I'll do, I'll say even dot append. What should I append? I. Yes, now you are getting right answer. चाहे कुछ काम करी है ऐसा लग रहा है. ठीक है. Else, if it is not an even, automatically it has to be an odd. So no need to check anything. What I'll do, I'll say odd dot append, and again I'll give I. Now let's check our even. सारे even numbers आते हुए दिख रहे हैं. All these even numbers are present over here. And if I check the odd, all the odd numbers are present over here. आपको समझ में आ रहा है? Now please do this thing. Well, is the concept of indentation getting clear?
डुप्लीकेट नंबर को फिल्टर करने के लिए फिर तुम्हें अलग कंडीशन करनी पड़ेगी। डुप्लीकेट नंबर्स को अगर फिल्टर करना है तो क्या करोगे, सोचो। वेरी सिंपल, कल बताया है, याद करो। सेट यूज करोगे। सपोज लेट्स से you are having some numbers which are repeated. So for example 2, 4, all these are numbers are repeated. So क्या करोगे, इधर देखो, if you want to remove duplicate, so what is this even? Even is nothing but your list. हम क्या करेंगे, even equal to set कर देंगे। और अब जरा even को देखो, duplicates हट गए, and again if you want you can again convert it back to your list, but order change हो चुका होगा, that you cannot control। ठीक है, वापस आ गया ऑर्डर। ठीक है, इतनी तकलीफ क्यों लेनी फॉर लूप वगैरह, सीधे सेट। If you want to remove duplicate, the best thing is convert it into a set। वैसे क्वेश्चन अच्छा था तुम्हारा। Done guys? डन तो तुम लोग कह रहे हो, बट मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। सर ने चाय में पी ली थी, राइट? ठीक है, तो मेरे लिए छोटा सा काम। पेन विंडो दिख रहा है? एयर विंडो से पेन विंडो। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल इज नथिंग बट, लेट्स से इफ आई से फैक्टोरियल ऑफ 5, व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ 5? प्रोबेबिलिटी क्लास में हमने डिस्कस किया है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, right? Similarly factorial of 6 would be 5 4 3 2 1, factorial of 1 would be 1, factorial of 0 भी वैसे 1 ही होता है। ठीक है, 0 is also 1। so now do one thing, write a code which will take input from user and print its factorial, print the factorial। ठीक है, it will, how to take the input, you already know input, you can combine with eval or you can combine with int, whatever। Can I find the factorial of 5.5? इसका factorial निकल सकता है? Can I find the factorial of 5.5? Answer is big no। इतना टाइम क्यों लगाया नो बोलने में? Factorials are always found for the positive integers। You cannot find the factorial of even -5। -5 का कोई factorial नहीं होता। Factorials are always found for a positive integer, 1 2 3 4 5 kind of thing। ठीक है, so keep one thing in mind when you are testing your code, you already know how to take the input combined with eval or input combined with your int, and then you print your factorial। just to help you guys, मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। it is your wish whether you use it or whether you don't use it। suppose let me say I want to create a list which has numbers from 1 to 20 or 1 to 30, 1 to 40, whatever। so how can I do this? I can say, let me say L3 equal to list, then what I can do, I can say range 1, 21। now if you check this thing,
Can you notice the numbers are starting from 1 and they are going till your 20. Okay. So list range. So what range will do? Range will start from 1 and it will go till your 21. It will go till 21, but it will not include 21. It will stop one number before it. Suppose if you want to create a list from 10 to 21, तो यहाँ पे 10 दे दो. ठीक है ना? इसको भी note down कर लो. This would be heavily used. Not now, but आगे जाके use करना ही पड़ता. So if you want to create a numbers, list of numbers, so you can say list range, lower limit and the upper limit. अच्छा. So it is 11:40. कितना टाइम चाहिए फैक्टोरियल प्रोग्राम लिखने के लिए? पांच मिनट. किसने बोला 5 मिनट? 5 मिनट. किसने बोला 5 मिनट? किसी ने नहीं. अच्छा कितना टाइम चाहिए तुम बताओ. 10 मिनट. ठीक है 10 मिनट. 11:40 हुआ है. टेक टाइम टिल 11:50. सेट कर लो वॉच. करो. मुझे क्या देख रहे हो? 3 का फैक्टोरियल 6 आना चाहिए. 3 into 2. लॉजिक सोचो. अगर मुझे फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल निकालना है, then 5 into 4 into 3 into 2 into 1, or you can say 1 into 2 into 3 into 4 into 5. कोई भी नंबर पे डाले एक लूप चल जाए. लूप 1 से लेके कितने तक चलेगा? अरे नंबर हाँ
सर मी पाठवते ते तुमच्या ईमेल आयडी तर सांगा ना बरं. हॅलो ओके मोर सेलिंग बिलो सॉरी थांबा एक मिनिट सांगा. शंकर 4 लाइन या 5 लाइन से हिंदी. ज्यादा बोल रही है बस. हा पुढे नंबर आहे का? 08@gmail. हा कोणतं पाठवतो सांगा. हा हे पाठवायचं पूर्ण हे टोटल टाकून दे. ते पण हे जेवढं आदित्य बिर्ला येईल तेवढं टाकून दे त्याला टाकायचं. बिर्ला हाउसिंग सबसे फाइनेंस खतरनाक लिमिटेड. स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे एक ही है तो मेरे चैनल ने तुम लोगों को दी. कितने लोग नहीं जान कौन नहीं जानता लॉग आउट स्ट्रेटेजी क्या है? अगर जिसको नहीं पता लॉग आउट स्ट्रेटेजी क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ so that आप लोगों को अच्छा लगेगा सीखने. लॉग आउट स्ट्रेटेजी अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं सिखा दूँ. देखो सबसे पहले क्या करना है आपको ना अपना एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है इसमें आपको क्या बोलते हैं अगर आपने ट्रेड लिया है नहीं लिया है अभी ट्रेड आप ले 10 minutes के 5 minutes are आपको क्या already करना है अपना बेसिकली अपने डीमैट अकाउंट में आना है. ठीक है डीमैट अकाउंट में आना है. राइट हैंड साइड में टॉप में प्रोफाइल का पिक्चर होगा उसके नीचे लिखा है लॉग आउट. मार्केट में रिस्पेक्ट कर रहे हैं लॉग आउट. ठीक है 27 जूनचा पाठवायचं. म्हणजे आधीची पाठवायची का? हा देऊन टाक. नाही सगळेच फार होते त्यातला जे पाहिजे ते करून. ते बीसी सारखे पैसे लावलेत का? बीसी सारखे काही लावलेत पैसे म्हणजे SIP या ऍडव्हर्टाइज देईन किती हा हे पहिले लोन आहे लोनचं आहे करायचंय ना. असं नाही होणार. ते पाठवलं ना आज 18/6/22 भरले का ते? 3 भरले more ना? minutes. भरलं नाही त्या बँकेतून ट्रान्सफर तिकडे करायचंय ना ते पण पाठवून दे जे 2 more minutes. 1 more minute. टाइम थोड़ा जल्दी जा रहा है. तुम लोग वैसे पढ़ाई करते थे अच्छे लगते हो. हेलो हेलो सर. Okay, so I think time is up. ये किसी को और टाइम चाहिए लगता है और कर लेगा.
नहीं ना, होना होता तब तक हो जाता। अच्छा, you put your solution. Let's project his solution. You put your solution in the chat. जोबिश, मैंने कुछ नहीं बोला, फॉर करो, वाइल करो, जो मन आए करो, रेंज यूज करो। मेरा काम है सब कुछ बताना। सेंड किया? वेट, तुमने सबको भेज दिया? देखो, लेट्स हैव अ लुक। So what he is doing, he is saying num equal to input enter. First of all, let's run it and see whether it's working fine or not. So 4, 24. Factorial 4 is 24. Factorial 3 is 6. Factorial 5, 120. Factorial 1, 1. Okay. Now ab ho kya raha hai? So at this line you are taking the input. You are taking the input. Then what he is doing, now this is one important thing which you need to do. Factorial equal to 1. You are, I'll say you are assigning a initial value. Initial value. If you multiply anything by 1, answer will not change. But if you take this as 0, then answer will change. Okay. So उसने क्या करा? Factorial equal to 1. Then I in range of I equal to num plus 1. Suppose, guys, let's say, सब लोग please ध्यान से देखो यहाँ पे. Let's say if you give 5 over here, then what would be num plus 1? Num plus 1 would be 6. And if you say num plus 1 would be 6. Okay. Now, if I do something like this, if I say list range, if you have given number as 5, yeah, I think kernel will start. If you have given number as 5, then num plus 1 would be 6. Num plus 1 would be 6, which means it would be 5 plus 1, right? Range of 1, 5 plus 1. So देखो 1 से 5 तक जाता है. For finding the factorial, you multiply the number till you have 1. Then factorial equal to factorial into 1. Let's say the value of number was 5. So when it will come into the for loop, what would be the first value of I? The value of I will start from 1. I की value 1 होगी, yes or no? Yes. Then factorial equal to factorial into I. What is the value of factorial? Initial value of factorial was 1. So 1 into 1 will become 1. 1 into 1 would be 1. So now this factorial will become 1. Again, it will go to your for loop. Now what would be the value of I? I की value कितनी हो जाएगी? 6, 2. Because numbers would be executed from this list, na? Value of I will become 2. Factorial की initial value हो गई 1. 1 into 2 becomes 2. Now again it goes to the for loop. Value of I will become 3. हाँ. So 3. So 3 into 2 will become 6. ऐसे रन होगा. ठीक है. समझ में आया है? वापस समझाऊं. अगर अभी समझ में नहीं आया तो इट मींस अब पेंट विंडो ओपन करना पड़ेगा. वापस समझो. अब सब लोग प्लीज ध्यान दो.
सपोज मैंने नंबर की वैल्यू एंटर कर दी है 5, ठीक है। लेट्स से द इनिशियल वैल्यू ऑफ नंबर इज 5. When you will come on this line, what would be the initial value of I? I की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? सब लोग एग्री करते हो 1 से स्टार्ट होगी? Why? Because I am saying in range of 1 से num plus 1. 1 से num plus 1 क्या होगा? लेस रेंज यही हो चीज होगी ना, ठीक है ना। सो रेंज 1 से num plus 1. सो देखो जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना, लेट सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया 5, ठीक है। And then if I say print I, अब समझ में आ रहा है? हेलो। स्क्रीन दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है। सपोज नाउ इज द विंडो दिख रहा है, ठीक है। सी बेसिकली गाइस, थोड़ा ध्यान से देखो सब लोग। आई वांट टू एक्सप्लेन दिस लाइन। ये लाइन क्या करती है? इज इट क्लियर फ्रॉम द लास्ट लाइन? इज इट क्लियर फ्रॉम द लास्ट लाइन? फॉर आई इन रेंज 1, 5 was 5 was nothing but a number. So it will start the value from 1 and it will go till 5. Yeah. Now, let's say you have given the num equal to 5. The user wants to find the factorial of 5 and you are trying to execute this code. So factorial equal to 1. Then for I in range of I equal to num plus 1. So what would be the initial value of 5? Yeah. What about now? Is it visible?
Yes, sir. Equal to 5. Everyone please go on mute. Again, let me repeat. I don't know which part people missed it or not. So I'm again repeating. So I want to explain this part. What is this doing? So can you notice the same thing I have written over here? And when I print I, how does the value of I changes? It changes from 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So it means when you enter in this for loop, the initial value of I would be 1. The next time the value of I will become 2. Now, let's say user has given the value of num as 5. You want to find the factorial of 5. तुम्हें 5 का factorial निकालना है. Factorial equal to 1. This is just a variable. So this variable value is 1. When you enter the for loop, what is the value of I? Value of I is 1. So what would be the initial value? What would this be? Factorial equal to factorial into I. So factorial equal to factorial into I. Factorial into I. Well, initial value of factorial is 1 and value of I is also 1. So 1 plus 1 calculation is 1 and this value would be assigned to your factorial. Then what will happen? Do you notice this line is not part of your for loop? ये line for loop का part नहीं है, because for loop का part होने के लिए you should have entered something like this. Now it becomes a part of your for loop. Because do you notice indentation is not there? Now, initial value of factorial becomes 1. Then again you will go to this thing. What is the value of I now? 2. Value of I is 2. Then it will execute this part. What was the value of factorial? Value of factorial was 2. Sorry, value of factorial was 1. 1 into 2 will become 2. So 1 into 2 will become 2. Now this 2 would be assigned back again to your factorial. Again, you will come to the for loop. Value of I will become 3. And what is the value of factorial now? Value of factorial is 2. 2 into 3 will become 6. And again, on the right hand side, the factorial will become 6. And this thing will continue. अब समझ में आ रहा है? Please करिए. अब देखो, अगर suppose if I put this thing on the, let me do one thing. सब लोग again ध्यान से देखो. I write 5. I get the answer as 120. Now, if I put this print little bit over here, आप देखो क्या होगा. Factorial of 5 is 1, 2, 3. हर बार ये print statement को print करेगा. Why? Because now this is part of your for loop. When you put it outside, it is not part of your for loop. When for loop will get over, then only this statement would be executed. दोनों में फर्क है. जल्दी से करो please, within a minute, and let me know. ये भी ठीक है. ठीक है. ठीक है. Fair enough. This is also okay. नहीं, अभी नेगेटिव नंबर डालना, फिर उसके बाद तो मल्टीपल इफ कंडीशंस डालना पड़ेगा. दैट आई शुड बी ग्रेटर देन 1 और आई शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड बी इंटीजर. वो एक अलग का पार्ट हो जाएगा, मल्टीपल कंडीशंस. इफ यू वांट टू पुट दोस कंडीशन, तो तुम्हें पहले यहाँ पे इफ डालना पड़ेगा. इफ एंड एल्स, ठीक है ना.
इतना हो गया सबका? अच्छा, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चंस दे दिए मैंने, वैसे दे वर सिंपल। अच्छा, कोड वाइज डू यू नोटिस इट इज अ वेरी सिंपल कोड। सिंपल कोड है, कोई बड़ा कोड नहीं लिखा हमने, राइट? सपोज करो यू क्रिएट अ वेरिएबल, गाइस वन सेकंड, यू क्रिएट अ वेरिएबल 2 and you put something, let me say you put something data, then if I say var2 and if I put some number, can I say people are clear with this last line? Can I say people are clear with this last line? Yes, sir. So basically I am saying one, I am fetching the alphabet which is at your first index position. We know that in Python indexing starts from 0, so for D it is 0, for A it is 1, right? अगर जिसको लग रहा है कि वो लास्ट वाला है तो probably let's say you would say 2, ठीक है ना? If I want to take the last number, let me say something, let me say study. So if I say -1, let's see what happens. So when you say -1, it takes the rightmost element. ठीक है, it takes the rightmost element. एक क्वेश्चन पूछने वाला है इसलिए वो सारी चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना. Now let me say I give something like this. (2::). So do you notice it is starting from second position and it is going till your end? So let me say whatever you have written. देखो, it starts from the second position and goes till the end. शुरू से whatever position you have given, from that it goes till your end. Any doubt, any questions? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, fair enough. Now let me say I want to select a particular part. I want to select only this much part. क्या possible है? Let's see. So what is the index position of U? Let me do one thing. Let me write a simple one. So that A, B, C, छोटा लिख देते हैं. A, B, C, D, E, F, G, H. Let me say I want to select from D till G. I want to select the from D till G. So what is the index position of D? Can I have an answer, please? Index position of D is 3. But this time I want to go till G, right? G की index position क्या है? 6. देखते हैं. ठीक है? Do you notice one thing? It is not including the G. Why? Because इसको Python में ऐसे बोलते हैं, it is going till 6 but not including 6. वहां तक जाता है but उसको include नहीं करता. It stops just one before. Why? Because your indexing starts from 0. अच्छा, D, E, F, G आया? G अभी भी नहीं आया. ठीक है. So what is the index position of G? Index position was 6, right? But when you give 6, when you give 3:6, तो वो 6 वो G नहीं देता है. अब देखो थोड़ा सा दिमाग घूमेगा. When you give 6, तो G दे देता है. ठीक है? This is what you need to keep in mind. When you directly give a number, it will directly take that position. But when you give in continuation, so it will start from 3, it will go till 6, but it will not include 6. ठीक है, इसको प्लीज याद रखना. Again I am repeating, when you give, so index positions कैसे थे यहाँ पे? Let me just put the numbers for more clarity. So index position for A was 0, for B it was 1, C it was 2, D it was 3, then it was 4, then it was 5, then it was 6, and then it was 7.
So when I give 3:6, it only takes this much part. It doesn't include 6. Am I right? But when I give 6, तो वो 6 दे देता है. ठीक है? Please take a minute and run this thing. उसके बाद मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं तुमसे. And don't take it in a light manner. Same concept will come in your pandas also when you have to select the number of rows or number of columns. Done? Okay, okay, take your time, take your time. Take 1 more minute. Okay. Can I put one small question over here? Now, write a code or program, whatever, which takes input from user. User से input लेगा. You already know how to take the input from the user. ठीक है? And check if the string, or if you are saying number, the number is a palindrome. Okay, I know that some people might not be knowing palindrome. What is palindrome? Palindrome is a string which is same from left to right and right to left. Example is dad. तुम left to right पढ़ो or right to left पढ़ो. Spelling is still same. Another example could be mom. Or artificial example could be APC and BA. Okay? So basically, you have to check if the string entered by the user, if it is palindrome or not. Agar palindrome hai, then print the message, the string is palindrome. If string is not a palindrome, print the message, string is not a palindrome. Requirement clear? Everyone knows what is palindrome? I think मैंने palindrome की spelling गलत लिखी, तुम लोग सही कर लेना, ठीक है ना? But example would be your mom, dad, sister नहीं, SIS only. And और कोई example palindrome का? चलो ठीक है, छोड़ो. But you write this code. And time, this time I will give the time. 4 minutes. ठीक है, 12:13 हुआ है. Take time till your 1 minute बढ़ा देते हैं. Time till your, let's say 4:17, 4:18. चलो. एक हिंट देता हूं, इट्स वेरी सिंपल. सिर्फ अब तक जो बताया है वो यूज करना है बस. करो 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 करो.
पैलिंड्रोम करने के लिए क्या करोगे? लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट को चेक कर लो, अगर सेम है तो इट्स अ पैलिंड्रोम। राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट को चेक कर लो। अगर एक टेक्निकल वर्ड यूज करूं तो स्ट्रिंग को रिवर्स कर लो, रिवर्स कर लो। हाउ वुड यू रिवर्स इट? रिवर्स, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स, रिवर्स करके कोई फंक्शन है क्या? लिस्ट में तो है पर स्ट्रिंग में तो है नहीं। अरे गाइस अभी बताया, देखो तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं हो जब मैं आपको समझाता हूँ। अभी एक तरीका बताया था ना -1 वाला, बस उसी को यूज करना है। -1 यूज कर लो। -1 will take the element from the last side and default is from the left side. कुछ लोग बिल्कुल ऋषि मुनियों की तरह से सोच, यू ऑल्सो एक भी सही क्वेश्चन नहीं निकाला। ये लोग ये आंसर कर पाएंगे तो दूसरों के पास भी आएगा। अपने नाम बताओ। हाँ, you tell me your name. उबैद। UBAID। हाँ उबैद, अपना ही नाम बताना है। ठीक है, वेदांत है। देन राहुल। एंड यू? शुभम। ठीक है, so Ubaid, Vedant, Rahul, Shubham, these 4 will explain me hypothesis and all the basic theory of stats whatever we have done. उधर पे आके, ठीक है, please be come prepared, ठीक है, don't take it lightly. And apart from these 4, any one more person that would be randomly picked. End to end वो मेरे को बताएगा whatever questions I ask. इन चारों नाम का नोट कर लो, मैं भूल जाऊंगा। मेरे को सिर्फ याद दिलाओ फ्राइडे को। फ्राइडे थोड़ा दूर है, चांसेस ऑफ फॉरगेटिंग आर वेरी हाई, बट मैं कोशिश करूंगा ना भूलूं। अगर फ्राइडे को भूल जाऊंगा तो सैटरडे तो फिर भी याद आई है, जैसे तुम लोग की शक्लें देखूंगा। Make a note of these 4 names and remind me that these 4 have to give the presentation. ठीक है? So it is already 12:18. Let's take it up, guys. बहुत ही simple था and probably you will feel done. Output आ रहा है? Shall I check? Shall I check? Okay, ठीक है। Okay, ठीक है। Let's do one thing. Let me say, take anything. Let me say name equal to input and enter the string you want to check. Let's put a proper message over there. ठीक है? Now what I'll do is I'll say, and before I go over here, guys, एक simple सी चीज देखो, ठीक है? Let me say variable 2 equal to Ubaid, ठीक है ना? Variable 2 equal to this thing. Now, is it a palindrome? क्यों नहीं है? Because left to right and right to left are not same. Remember, I have just told you something like this. So if I say var 2 and if I give -1, so it will give me the last thing. ये चीज clear थी? And if I say var 2 and if I say :
then also it will give me the complete thing. ठीक है? Or if you want, you can give the length. Let's say from 0, what is the length of this thing? 0 to 5. ठीक है? ये सारी चीजें बताई थी. Purposefully एक चीज नहीं बताई, keeping in mind that you will think. If I say -1, do you notice it is reversing the string? It is reversing the string. Now can I compare these two things? And अगर ये दोनों equal हैं, then it is a palindrome. Otherwise, it's not a palindrome. Are you getting my point? So over here, the string is reversed. सब लोग please बताओ, do they agree that string has been reversed? Yes. Now use the same thing. If name equal to name colon -1. ठीक है? अगर ऐसा है, then print string is palindrome, followed by, you also print that string. Print your name. Else the string is not a palindrome. Let's do a check. ठीक है? Enter कर देते हैं ABC. It's not a palindrome. Enter कर देते हैं dad. Is a palindrome. बताओ मुश्किल था? बिल्कुल मुश्किल नहीं था. And almost सारी चीजें बता दी थी. Purposefully ये डबल कोलन नहीं बताया था. Actually डबल कोलन ऊपर बताया भी था. But रिवर्स वाला डबल कोलन पर्पसफुली नहीं बताया था. कीपिंग इन माइंड, यू विल गेस इट. You reverse the string. अब प्लीज एक नोट करो, एक टेक अ मेंटल नोट. टू रिवर्स द स्ट्रिंग यू डोंट नीड एनी स्पेशल फंक्शन. यू जस्ट से -1 ::. ठीक है? दैट इज हाउ यू रिवर्स समथिंग. ठीक है guys, so with this I'll end the session. Thank you for joining. But before I end the session, जाते जाते एक प्रॉब्लम दे जाता हूँ. ठीक है? Write a program. 3 दिन की छुट्टी है ना?
write a program which will check if number is a prime number. नंबर एक प्राइम नंबर है कि नहीं. It will take the input from the user and will check whether number is prime number or not. ठीक है. Another is, this is one requirement. Another requirement. But ये प्रोग्राम तुम लोग नहीं लिख पाओगे, छोड़ो, नहीं लिख पाओगे. अच्छा ठीक है, अब बोल दिया है तो ठीक है. Write a program to check whether a number is prime number or not. ठीक है. ऐसा प्रोग्राम है जो गूगल पे ना मिले, उसके लिए अभी तुम लोग उस लायक हुए नहीं हो. देखो गूगल पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो मिल जाएगा, ठीक है ना, ये मिल जाएगा, बट दैट इज योर चॉइस कि तुम्हें गूगल देखना है कि नहीं देखना है. ठीक है. ऐसा कोई प्रोग्राम तो मैं अभी तुम लोग को नहीं दे सकता हूँ, बट लेट मी सी. अभी के लिए इतना ही प्रैक्टिस करो जितना मैंने बोला है ना. ठीक है गाइस, सो आई विल एंड द सेशन.